Muhal village falls in the Beas River basin, only 5 kilometers from the Maharana Pratap Sagar Reservoir. The farm falls in the lower section of the village's watershed. Hence, the farm receives almost 40 lakh liters of excess rainwater through surface runoff annually from higher areas of the village. Muhal village, where the farm is situated, has a population of about 1300 to 1500 people. The village lies in the lower Shivalik, a sweet spot between the subtropics and the warm temperate climate. And there is a lot of potential to grow a diversity of plants for food and to serve the ecosystem. The farm falls in the monsoon influenced humid subtropical climate with the coldest month averaging around 0 degree centigrade. The farm gets strong winds during summers and winter months, and monsoonal winds are more gentler. Early to late summer also brings in occasional storms and hail, while deep winters brings in the frost for a few weeks. The region is still an important habitat for birds. These habitats are highly vulnerable to further degradation due to logging for firewood or conversion to grazing and farmland, and more recently forest fires. When I first met Ankush in the summer of 2023, all he dreamt of for his family run farm was to be a healthy ecosystem, grow a lot of food, set up a space of learning and support for the village community. He was already familiar with the terms like regenerative agriculture, permaculture, and natural farming. He wanted the farm to first become abundant and furthermore become a role model in the community by applications of ethical land management practices. The farm has been with Ankush's family since generations. By 2013, only a few terraces at a higher section of the land were being cultivated, which could be protected from the wild animals, while half of the land had been left to wild growth. The farm boundary was surrounded with tall clumps of bamboo falling on top of each other with no real fence. By the time I did a 2-day site visit in July end, Ankush had already put in a perimeter road and dug some ponds on the farm with mixed results. In permaculture, to design a resilient landscape, we use a design tool called Scale of Permanence, which was developed by an Australian farmer and engineer, P.A. Yeomans, in the 1950s. We observe, analyze, and plan for various natural elements in a serial order. So the first in the list is climate, then land shape, then water, followed by access, which is roads and pathways, trees, structures, fences, soil, crops, animals, and so on. The basic idea is that as we move down this list of elements, we are moving from permanent natural elements to less permanent natural elements. Overall, the soil texture is silty loam with topsoil pH between 7-7.5. The region lies in the mountain subtropical forest classification in the Himalayan mixed forests and grassland bioregion. After capturing and analyzing all site data, it was time to move into the next steps of design, where I put all natural and human flows that influence the farm on the existing base map of the farm. My name is Swati Khambhayata. By training, I'm an architect, and we work on regenerative landscape projects. So let us introduce you to this project. So site is divided into different zones. So let's talk about zone one by one. Let's look at the different zones. So there is a botanical garden which is laid in the spiral layout. Here we have planted species from the Himalayan region, trees, small trees, shrubs, climbers, and ground cover. So ground covers are majorly aromatics and medicinally valuable shrubs.
Then we have large shrubs, which is more like different kinds of tulsis, ajwain, kapoor tulsi, the different varieties. Then we have certain endangered species, which are the trees. So that is the botanical park. Then so the botanical park is developed with an intention of preserving the species as well as the knowledge of those with trees. And apart from that, there are other elements like food forest, mandala garden. Then we have a small area where the gathering can happen, which we call lawn area. So these are the different elements which are there to support the overall project. So the food forest is providing us with the fruits. We have planted about 30 different varieties of fruits. Then we have mandala garden or vegetable garden where we grow seasonal vegetables. Then we have a small area where a sports area where village community, the kids from the local village can come and play sports here. So the whole zoning is done in a way that we have different planting zones and each zone gets enough sunlight, and we have left some pockets in between where the grid of the trees is large, means there's enough there's 20 feet distance between two trees, so we get enough sunlight after the canopy is developed of the planting trees. So basically there are sunny areas and shaded areas, a couple of sunny spots, and rest of them are shaded areas where the trees will eventually tree cover will develop. We are trying to learn from the forest and implement these strategies onto the project. The whole practice is happening on the regenerative farming principles. This whole site used to be basically farms with few trees, which we are now converting it into botanical park, food forest, garden where we have aromatics and herbs growing. Then we have lots of flowers which are like native to this area. So our idea is to introduce inoculants and establish, condition the soil in a way that whatever biomass which is already available on site, it gets decomposed, and through the help of soil organisms it converts itself into the manure, khad. So that we don't have to, when we are planting fruiting trees, we don't have to get manure from outside or any fertilizers from outside. Maximize the sunlight. What we have done is that, for example, sunlight is coming from the south, so we have ground cover, then we have shrubs, then we have small trees like bananas and papayas, then we have forest trees, and then at last we have bamboo growing. So this is the layers that we have designed in the plantation zone, so that all the planting layers receives maximum sunlight. So the site already has lots of old trees and grasses growing, so we get to harvest lot of biomass every season. So all this biomass is converted into compost by the local farm ladies who are maintaining this area. Ladies from the village are coming and working, so they are employed, as well as they are gaining knowledge of what are the other ways of making of earning their livelihood, and not just depending on the conventional agricultural models. We have created 3 stormwater collection ponds. Eventually one of them can convert into a natural swimming pool. So the local community has sports activities, fitness activities. They can come and take a walk in the park. There are walking pathways made on the whole site. And once all these herbs and aromatics and trees, once they develop once there is growth, there'll be seed collection which will happen. So this whole knowledge of endangered Himalayan species which are disappearing with time as we humans are cutting down more forests,
the attempt is to preserve them and spread the knowledge, or retain the knowledge at least. Then we have one zone which is a forest, which is untouched forest zone. So just in the south, we have adjacent wild forest already, which is connected with the site. So that area we have left as it is, but we have introduced bee boxes in that area. It is also engaging for the visitors who can come and maybe take away some certain produce from the farm with them. So these are the different activities happening on the project. हमारी स्वर्गीय दादी श्रीमती सेवा देवी ने जब ये ज़मीन बैरन लैंड हमारे पिताजी को हैंड ओवर की, उस समय इधर कोई ट्रीज वगैरह नहीं होते थे। तो जब हमारे पिताजी कैप्टन मनसाराम जो 1979 में रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने इस बेंच का निर्माण कराया और वो इस बेंच पर बैठकर इस पार्क के बारे में हमें बताया करते थे कि इधर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। और उनके वो उसी टाइम दिमाग में चीज़ थी कि वो इसको, इस ज़मीन को, बैरन लैंड को इस तरीके से डेवलप करें कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो हैं वो इधर सुबह शाम आकर अपना टाइम पास कर सकें। 2012 में उनकी देहांत के बाद मैं पेंशन आया था उस टाइम, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को हैंड ओवर कर दी और 15 साल तक मैंने फिर इसमें कुछ एडिशन किया। इसमें सागवान, लीची और दूसरे जो इधर के लोकल प्लांट्स हैं वो लगाए इसमें। तो 15 साल से मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा था, परंतु जब हमारे बच्चे हमारे से टेक ओवर किए तो मैंने इनको इस हालत में दिया कि ये बड़े बड़े प्लांट जो हैं वो इसमें थे। तो आगे की प्रोग्रेस इन्होंने फिर शुरू की अपने हिसाब से और ये अभी इसमें काफ़ी एडिशन कर रहे हैं। इन्होंने बाहर के पौधे भी लगाए इसमें और अभी एक बॉटनिकल गार्डन के रूप में अच्छी तरह से उभर रहा है, जो कि इस एरिया में एक मिसाल कायम होगी एक दिन और लोग बहुत दूर दूर से इसमें देखने के लिए आएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना गांव संगनी का रहने वाला हूँ। मैंने अरण्य फार्म हाउस में डॉक्टर नरसन्ना जी के पास पर्माकल्चर का कोर्स किया, जिस दौरान उन्होंने हमें पर्माकल्चर के बारे में बताया, इसके 12 प्रिंसिपल जिसको लेकर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और सोइल टेस्टिंग, ब्रांचेस के बारे में बताया, कंपोस्टिंग के बारे में बताया और समर विंटर में प्लांट की सही डायरेक्शन कौन सी है उसके बारे में, फायर ब्रेक के बारे में बताया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और विंड ब्रेक के लिए बैम्बू अपनी बाउंड्री के ऊपर लगा सकते हैं, और वाटर स्टोर के बारे में बताया, पानी इकट्ठा करने का तरीका जिसमें हम अपनी वाटर चैनल के माध्यम से पर्कुलेशन टैंक तक पानी पहुंचा सकते हैं, और वेल्स के बारे में बताया। वेल्स में जैसे बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे कि ज़मीन में पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने पिछले नवंबर में यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया था और मार्च महीने में प्लांटेशन की थी, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 1 साल में कितनी हरियाली हो चुकी है। मैं ग्राम पंचायत मोहल वार्ड नंबर 3 का सदस्य हूँ, ब्लॉक देरा, ज़िला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। ये हमारे बुजुर्ग श्री कैप्टन मनसाराम जी ने इस पार्क का बहुत काम पहले शुरू किया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन उनके पोतरा श्री अंकुश जी ने एक ऐतिहासिक जगह बना दी है। ये लोगों को इसमें काम भी मिल रहा है और हमारे स्वयं सहायता समूह ग्रुप जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इससे। जैसे हमारे गांव में बहुत से फ्रूट्स जो है बेकार हो जाते हैं,
जैसे गलगल है, जिनको खट्टे बोलते हैं हम, आम है, नींबू है, दड़ुंज है, ये सभी बेकार होते हैं। हमारे गांव के सभी लोग अगर इसको चालू रखेंगे, नए ऐसे गार्डन बनाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम विनय राणा है। मैं मूहल गांव से हूँ। यहाँ पे एक बोटैनिक पार्क बनने जा रहा है। अभी इसका काम चला हुआ है और इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है सभी लोगों को। नए नए और अलग अलग किस्म के यहाँ पे पौधे हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे होंगे तो अच्छी बात है और बच्चों को भी यहाँ से बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पार्क बनाया जा रहा है और ये यहाँ पे हर एक किस्म के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे मेडिसिन प्लांट है, ये यहाँ बहुत लगाए जा रहे हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसे पानी का लेवल ज़मीन से बहुत डाउन चला गया है और पानी की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है।